Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Glorious Pakistan. I'm your host Shehzad Qayyum. Folks, right now I'm standing at Badshahi Mosque. It faces the Lahore Fort. On the northern side is the Mazaar-e-Pakistan, and old walled city of Lahore faces the southern side of this Badshahi Mosque. The mosque was actually commissioned in Emperor Aurangzeb's tenure. Therefore, this was back in 1671. It was completed in 2 years. The Badshahi Mosque, also known as the Imperial Mosque, once stood as the ultimate expression of Mughal architectural mastery, religious devotion, and imperial pride. Located in the heart of Lahore, directly in front of the Alamgiri Gate of the Lahore Fort, this architectural wonder had captured the imagination of people for centuries. It was built under the patronage of Emperor Aurangzeb Alamgir, the sixth and last of the great Mughal emperors. Aurangzeb ordered the construction of a mosque so magnificent that it would rival any other in the Islamic world. The construction was completed in an impressively short period of 2.5 years by 1674 AD, which was the incredible achievement considering the scale and complexity of the structure. The mosque was built using the combination of red sandstone and white marble, both of which were signature materials of Mughal architecture. The red sandstone provided a sense of boldness and permanence, while the white marble added softness, elegance, and light. Together, they gave the mosque its unique identity, simple yet majestic, firm yet graceful. Spanning across a vast area, the mosque was capable of accommodating nearly 100,000 worshippers at one time. This made it not only the largest mosque in the Mughal Empire, but also one of the largest mosques in the entire world at that time. The enormous courtyard, measuring 161.5 by 160.6 meters, was considered the largest mosque courtyard in the world used for outdoor congregational prayers. It was this courtyard where thousands of people once stood shoulder to shoulder in silent unity during the Friday prayers and Eid congregations. The mosque's main entrance gate, a structure in itself, measured over 21.33 meters in length. It was built as an imposing welcome to all who entered this sacred place. The entryway opened onto a raised platform that offered a dramatic first glimpse of the prayer hall and the marble domes. The spiritual grandeur of the mosque revealed itself in stages, an architectural strategy commonly seen in Mughal design. The prayer hall of the mosque was divided into 7 chambers, each crowned by domes made of finely polished white marble. The central dome, being the largest, formed the main visual focus of the mosque's skyline. The domes not only served as architectural ornaments but also helped in acoustic, carrying the Imam's voice across the vast hall and even into the courtyard during prayer. Perhaps most iconic of all were the 4 minarets. Positioned at each corner of the mosque, each minaret stood at an impressive height of 54 meters, which is about 177 feet, and had an outer circumference of 20 meters. Built in red sandstone and topped with white marble cupolas, the minarets provided a symmetrical and balanced outline to the entire complex. They also offered sweeping views of old city of Lahore, the Ravi River, and the Lahore Fort. In the past, they served as lookout towers as well as spiritual beacons calling the faithful to prayer.
So when we talk about the capacity of Badshahi Mosque, it's quite huge because it can actually hold approximately 100,000 people at a time. So in other words, 100,000 people can offer prayers here at the same time. And also a lot of people who are not residing in the surrounding areas or in the old cities anymore, because they have moved to the outskirts of the cities and the outer parts of the city. They come here on the festivals like Eid and other festivals. They offer the prayers here because it's their old neighborhood. That's something that I learned. Somebody just told me who used to live here in the old Lahore city, but actually they come here on the festivals and offer the prayers here. The mosque was built during a time of cultural prosperity, political power and religious dedication. It reflected the broader philosophy of the Mughal Empire, where art, architecture and spirituality intertwine. Unlike the earlier Mughal emperors like Akbar and Shah Jahan, who were more inclined toward cultural fusion and architectural experimentation over the centuries, the mosque witnessed the rise and fall of empires. In 1852, under the supervision of John Lawrence, then the British Commissioner of Punjab, the mosque was handed back to the Muslim community for religious purposes. In modern times, the mosque underwent further restoration in the 1960s and 70s under the supervision of Waqf Board with the support of leading architects and artisans. Today, it stands not just as a place of worship but also as a UNESCO World Heritage tentative site, a symbol of Lahore's rich Islamic heritage and source of national pride. Generations of historians, travelers, poets and architects had admired its intricate calligraphy, floral motifs, symmetrical layouts and the harmony between its spiritual function and physical beauty. Even in the age of technology and modern architecture, the Badshahi Mosque continued to echo the spirit of the 17th century Mughal Empire, a time when power, faith and art converged to produce some of the finest monuments the world had ever seen. Today, the Badshahi Mosque remains one of the Pakistan's most iconic landmarks, visited by thousands every week, whether for prayer, cultural tourism, photography, or simply to witness a breathtaking sunset behind its domes. It serves as a powerful reminder of a glorious past and an enduring heritage that continues to inspire generations. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं. Folks, we are at the Mausoleum of Dr. Allama Muhammad Iqbal right now in Lahore. Allama Iqbal is the national poet of Pakistan, and he has played vital role in creation of Pakistan with his poetry. Now, Allama Iqbal also is the person who saw the dream of Pakistan. Located beside the grand walls of Badshahi Mosque and not far from the Lahore Fort stood one of the most spiritually and nationally significant monuments in Pakistan, Mazaar-e-Iqbal, the final resting place of Allama Muhammad Iqbal, the national poet of Pakistan and the visionary behind the idea of a separate Muslim homeland. Allama Iqbal had passed away on 21st April 1938. Long after the creation of Pakistan. But his poetic wisdom, political foresight and unwavering belief in the spiritual revival of Muslim world had made him one of the most respected thinkers of the 20th century. After his death, the people of the subcontinent, particularly the Muslims, felt a deep need to preserve his memory in a manner that reflected the intellectual and emotional depth. The construction of his mausoleum began several years after his passing. It was not just a grave, it was built as a national monument, symbolizing Pakistan's ideological foundation. The tomb was completed in 1951, designed by Nawab Zain Yar Jang Bahadur, the then chief architect of Hyderabad, Deccan. The design of the mausoleum was carefully selected to reflect both Islamic architectural elements and the aesthetic sensibility of the Indo-Muslim tradition. Made of red sandstone from Jaipur, the same stone used in many Mughal-era monuments, the mausoleum represented a blend of simplicity, strength, and beauty. The structure followed Mughal-style architecture with a small dome in the center.
These stylistic choices were symbolic of Iqbal's deep connection with Islamic philosophy, Persian literature, and cultural legacy of the Muslim world. The interior of the mausoleum housed Iqbal's actual grave, which was beautifully decorated with a white marble and inscriptions of his Persian poetry, Quranic verses, as well as selections from his famous works such as Bange Dira and Payam-e Mashriq. Every detail from the texture of the stone to flow of the inscriptions reflected reverence and admiration for the man who once envisioned Pakistan in words long before it appeared on the map. At the foot of the grave, visitors once stood in silence, many with hands raised in prayers, reflecting on Iqbal's legacy. His thoughts had not only inspired the youth of his time, but also laid the intellectual groundwork for the Pakistan movement. Guarding the mausoleum was a permanent ceremonial guard, often rotated between branches of Pakistan's armed forces. The changing of the guard ceremony was a moving experience for visitors, reinforcing the idea that Iqbal's contribution to Pakistan was a living legacy, remembered not only by scholars and poets but also by soldiers and citizens alike. नाज़रीन, लाहौर सकाफ़ती विरसे के हवाले से भी बेहद अहम है और यहाँ पे हमें बेशुमार मुग़लिया दौर की इमारत और उससे कदीम इमारत भी मिलती हैं। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस तमाम पुरानी इमारत को इनको अपने आर्ट के ज़रिए छोटी फॉर्म में महफूज किया है। हमारे साथ इस वक्त जमील हुसैन साहब जो कि एक रिनाउंड सेरेमिक आर्टिस्ट हैं वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। और सबसे पहले हमें ये बताइए कि सेरेमिक आर्ट की तरफ आप कैसे आए और फिर इन तमाम जो इमारतें हैं यहाँ पे हमारी मुग़लिया दौर की या उससे भी कदीम, इनको आपने अपने आर्ट के ज़रिए छोटा करके कैसे प्रिजर्व करने का ख्याल आया ज़हन? दरअसल आर्ट फॉर्म में दो चीज़ें हैं, एक आपका इंसाइक्लोपीडिया, आपकी थॉट प्रोसेस, या आप हर बंदे की डिक्शनरी है, वो आपके टाइम के साथ साथ इकट्ठी होती रहती है माइंड में। सेकंड है स्किल। मेरा ख्याल है मुझे फ्रॉम माई चाइल्डहुड मुझे बहुत शौक़ था पुरानी बिल्डिंग्स को देखने का। मतलब जब मैं आर्ट में नहीं भी था तो अगर मुझे कुछ पता लगता था फोर्ट का या कोई पुरानी बिल्डिंग है तो मैं खिंचा चला जाता था। तो एक वो था। फिर स्किल, मुझे अभी भी मेरे स्कूल के दोस्त मुझे कहते हैं कि हमें लगता नहीं कि तुम कुछ चेंज कर रहे हो, हमें वही लगता है कि जैसे मैं चौक को प्रकार के साथ काट के तो उस वक्त चौक के अंदर स्कल्पचर्स बनाता था। अच्छा। तो वो मेरा ख्याल वो एक चीज़, फिर बीच में एजुकेशन आ गई, फिर बीच में और चीज़ें आ गई, चीज़ें डिस्कनेक्ट हो गई। फिर जब टाइम मिला तो जब मैंने किया तो फिर वो कनेक्शन दोबारा रिकनेक्ट हो गया। तो वैसे भी मिट्टी से मुझे प्यार है, दोस्ती है, मैं समझता हूँ इसको, और इसकी बाइंडिंग और इसकी बहुत सारी फ़िलासफ़ी जो सी ने ह्यूमन बिहेवियर के पास है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी ह्यूमन बिहेवियर में होनी चाहिए, वैसे ही आपको मिट्टी में नज़र आता। जो बेसिक मिट्टी का बिहेवियर है वो ह्यूमन बिहेवियर के बिल्कुल क्लोज़ है। इसलिए कुरान में भी खासी दफ़ा ज़िक्र है कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया, यानी कि इंसानी रवैयों में जो लचक होनी चाहिए वो आपको मिट्टी सिखाती है। और इसकी सॉफ्टनेस, इसकी हार्डनेस, इंसानी बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा है। बाज़ दफ़ा छोटी छोटी बात लेके बैठ जाता है, बाज़ दफ़ा बड़ी सी बात बर्दाश्त कर जाता है। मिट्टी भी ऐसी है, बाज़ दफ़ा इसको कुछ नहीं होता, बाज़ दफ़ा हल्की सी ठेस लगती है तो टूट जाती है।
और फिर इसमें बाइंडिंग है, इसमें रिलेशंस को जॉइन करना, इंटैक्ट रखना, एक पूरी थेरेपी है ये। तो ये हमें बहुत कुछ सिखाती है मट्टी जो सी ना, और जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं इसकी रीडिंग, और पहले जिस मीडियम में मैं काम करता हूँ उससे दोस्ती करता हूँ, ताकि आपको पता हो कि जैसे आपका दोस्त होता है ना, आपको पता होता है कि अब मैं इससे ये बात करूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, इसी तरह मट्टी भी नाराज़ हो जाती है कि वो एक ख़ास टाइम होता है जिस पे आप इसको काव कर सकते हैं, एक ख़ास टाइम है जिस पे आप इसको बाइंडिंग इसकी कर सकते हैं। तो लिहाजा इट्स वेरी गुड मीडियम, और आई एंजॉयड अ लॉट व्हाइल वर्किंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Lahore, the cultural heart of Pakistan, has always been a city where art, architecture, and tradition breathe side by side. Among its many artistic legacies, one quietly enduring craft is that of ceramics, a medium that has not only preserved aesthetic beauty but has also become a powerful tool for heritage conservation. One such voice in the movement is that of Jamil Hussain, a ceramic artist whose journey began in the early years of his life with a fascination for two things: the built heritage of his country and the delicate, responsive nature of wet clay. अच्छा, ये कुछ मॉडल्स मैं देख रहा हूँ, ये बाकियों की निस्बत जैसे ये इतना चमक क्यों रहे हैं? अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिस्ट रेजिडेंसी ज्वाइन की, आर्ट एंड डिज़ाइन की। ये प्रोजेक्ट था स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का। तो उसमें क्योंकि क्राफ्ट भी अब एक डाइंग प्रोडक्ट्स में शामिल हो रहा है, जो नई जनरेशन है, क्योंकि एक टिपिकल हमारे डिज़ाइन चल रहे थे जिसमें आपको डियर्स भी हैं, शेर भी हैं, एलिफेंट्स भी हैं, जो दूसरे मुल्क भी कर रहे हैं। तो मैंने जो नए क्रिएट किए हैं, दिस इज़ द इंफॉर्मेटिव अबाउट आवर द हिस्ट्री। ये हमारी हिस्ट्री बेस्ड क्राफ्ट हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है, और ये सारी टाइपोग्राफी है जो कि हमें रिटन फॉर्म में मिली है। और इसके ऊपर तकरीबन 200 के करीब रिसर्चर्स ने काम किया अभी, लेकिन ये रीडेबल नहीं है। अच्छा। तो जबकि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की टाइपोग्राफी है वो रीडेबल है, क्योंकि उसका एक रोमन स्टोन मिला था जिससे वो उसको सारा एक्सप्लोर हो गया। अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, और ये इसमें ये चतराई का काम कहलाता है, और ये बीच में मैंने टेराकोटा जो टॉयज़ थे उनको उसको मेटल में किया हुआ है। ये हमारा बुद्धा, फास्टिंग बुद्धा है। ये एक रियर पीस है लाहौर म्यूज़ियम में, जो कि विज़िट के लिए दूसरे मुल्कों में भी जाता है। तो फास्टिंग बुद्धा उसका मॉडल है, ये भी ब्रॉस में है। और आगे ये भी ये टाइपोग्राफी है, और ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। टेराकोटा टॉयज़ हैं, और ये उनके वर्शिप गॉडेसेस हैं, और ये सारे उनके टाइप्स हैं जो अभी इस पर रिसर्चर्स काम कर रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत अच्छी डिज़ाइन वैल्यूज़ भी हैं, अगर आप उसको देखते हैं तो ये हमारा पूरा एक असासा है जिस पे हमने कभी तवज्जो नहीं दी। तो मेरा ख्याल है जो अब हमारा अपना जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो अपनी हिस्ट्री है, उसको पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट करना चाहिए। Right. These two childhood passions stayed with him throughout his life, eventually merging into a powerful form of artistic expression. For him, heritage was never just about stone and structure. It was about stories, identity, and memory. Lahore, with its crumbling havelis, majestic forts, and aging mosques, stood as a living museum. ये फैसलाबाद का क्लॉक टावर है, टेराकोटा में है। उसके बाद ये मेरा इमेजिनेशन वर्क है, ये भी मॉडर्न। और ये गुलजार महल है चनियोड का, जो कि इसकी ये जो पोर्शन है ये डिस्ट्रॉय हो गया हुआ, ख़त्म हो गया। अभी ये इतनी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसकी भी खस्ता हालत है, जबकि ये 2 फ्लोर जो से ये इंटैक्ट है। और इट्स वंडरफुल बिल्डिंग, जिसको अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कंजर्वेशन पे इस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और ये भी टेराकोटा बेस्ड है, ये इमेजिनेशन के साथ। और दिस इज़ माय फर्स्ट पीस जिससे मैं इंस्पायर होकर मैंने ये सारा काम डेवलप किया, और इसको मैंने कभी भी सेल नहीं किया, क्योंकि दिस इज़ माय इंस्पिरेशन। यहाँ से स्टोरी शुरू हुई है। On the other hand, his love for clay offered a medium that could preserve what was fading. Wet clay, with its silken touch and ability to mold into any form, became his way of retelling the story of these neglected spaces. He found in ceramics the perfect language to speak about disappearing monuments, fading facades, and forgotten details of built heritage. Jamil Hussain believed that ceramics could do more than decorate. It could document, it could protest, and above all, it could remind. जमील साहब, ये एक बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है, और ये काफ़ी इसमें डिटेल वर्क भी है।
ये सबसे पहले तो ये बताइए कि ये किस चीज़ का मॉडल हमारे सामने है, और ये इसको तैयार करने में जो कि हम देखते हैं कि काफ़ी इसमें हार्ड वर्क भी इन्वॉल्व है, डिटेल्स भी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली जो मेरा वर्क है ऑल अबाउट आवर बिल्ड हेरिटेज, जो हमारा पुराना तामीराती विरसा था जो ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और हम वेस्टर्न स्टाइल की तरफ जा रहे हैं। तो जो हमारा ईस्टर्न स्टाइल ऑफ लिविंग था, जो आर्किटेक्चर था, उससे मेरा काम है ज़्यादा। और बहुत सारे मुल्कों ने अपने हेरिटेज को सेव करके डेवलपमेंट की है, टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से भी। तो मेरा काम भी वैसे है कि जितने और ज़्यादा मेरा काम इमेजिनेशन बेस्ड है, क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्डिंग्स को एज इट इज़ नहीं बनाता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद वो जिन्होंने बनाई शायद वो मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है उसमें। हाँ, बेसिक एलिमेंट हैं ताकि लोग उसको रिटेल में देखें और उनको वैल्यू करें। अब वो बेसिक एलिमेंट जैसे ये झरोका है, बालकनीज़ हैं, ये लाहौर, अंदरून लाहौर में चल जाएं तो आपको कॉमन बेशुमार जगह पे नज़र आएगा। और इसकी जो इमेजिनेशन है, फिर जो स्टेयर केस हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, एक रास्ता चलता है, मेन एंट्रेंस डोर से शुरू होता है और फिर ये स्टेज के साथ साथ पूरी एक स्टोरी टेलिंग, एक उसमें एक स्टोरी चल रही होती है। और एक वे टू सक्सेस भी है, मतलब आपको एक ट्रैवल में और इसमें, क्योंकि आर्टिस्ट का जब तक अपना परसेप्शन आर्ट पीस में नहीं शामिल होता तो वो उसको आर्ट की वैल्यू नहीं मिलती। वो अगर हम कॉपी करते हैं तो वो कॉपी इट इज़ like a copy. Right. His artworks often inspired by Mughal era construction like tile patterns, old city textures, and broken calligraphy served as visual records of places that once stood tall in our collective memory. He often said that heritage gives a nation its identity, and the heritage of Lahore was its soul. From the domes of Badshahi Mosque to the intricate motifs of Wazir Khan, from the wooden balconies of old Androon Sheher to the fading tiles of Chuna Mandi, these elements form the visual vocabulary of his ceramics. But this passion did not remain his alone. Over time, a new generation of artists and craftsmen began to pick up the thread. Through his work, Jamil Hussain aimed to create an awareness. He tried to give voice to what was forgotten and bring it back into the public gaze, not by building monuments again, but by capturing their spirit in clay. Much like a flower placed in a drawing room becomes the center of the attention, he hoped his pieces would make people stop, look, and remember. Lahore's ceramic tradition now stands at a critical point, not only as a craft but as a means of heritage revival. And with artists like Jamil Hussain and many others continuing to mold memory into form, perhaps the story of our city is not yet lost. Perhaps it is simply being retold.